No, not the petitioners, the respondents. All of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that, Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become No, respondents. please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? Ji. For response, because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't. Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the. No, just run through the names. We don't want to make a mistake. Raja Tahir Nawaz Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No, 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent that. I don't represent them. Okay, fine. Charlie, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing. And I know that Your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, Your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And
denying an electoral symbol, Just slow down. Contesting elections with a uniform election. unified symbol falls squarely. Unified Symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. this right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and comma an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, that my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in A discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law,
cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Your Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June, 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections.
So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October, 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry, 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se
in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number 3, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These 3 things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore, the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they're not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases.
Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates. We've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word malafide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is malafide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now, you must show such malafide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper. I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general. So, every election, everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains. But you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Let me start with the facts first. Then we come. If we can just start with 14 members and destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो
इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, बाय सिंपली सेइंग अब आपकी 15 कंप्लेंट वहां गई हैं ईसीपी में जी ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन जी somebody has filed a complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहां पे, तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था। बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए ना, जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले कि जो करना चाहता है इलेक्शन, जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं, और फिर सारा दारोमदार आपके अपने PTI के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आई गॉट दैट, You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling your mind, and we want to save time also. I appreciate Because every election we will find some more this for particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक। So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था, they have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी, आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. Now But a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं, at least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहां से भी जा सकते हैं, but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का वो तो खैर आप वहां जाना चाहें वहां चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol तलवार. फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army?
there does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल So जरा से आप ये malafide का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको substantiate कीजिए. मैं जिस तरह लूँगा, it changes the prism completely. Right. If they're malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying, in terms of. See, you can withdraw it if you want to. You can't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I'm basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation, please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols
But here it is connected with the party elections. That's the thing. My point is, Because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? but my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Ali Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश करने के जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशार का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में. मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशार नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आप पोस्ट पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations, ना? Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not a If you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो. नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए पहले, आप ये पढ़ लीजिए paragraph 22 पेज बताइए प्लीज. page 612 के ऊपर paper book number 1. नहीं, sorry, paper book number 3. Paper book. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers.
Such eventuality is well defined in the procedures provided under clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there's enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter, 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. Okay. As discussed here and above, in accordance with clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, not on the
on the question कि आपने कहाँ venue कहाँ था, not on the question कि आपकी schedule. अली जफर साहब जी, That is what I'm saying. नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तो अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन की उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इंक्लूड बिफोर अस हैज आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस. से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है. तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूं, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I am exactly, that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट है, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक है, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको. क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे. जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता. तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे. कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है नहीं. अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट. क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा. सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है. नहीं कि मैं तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर. ये आप किधर से बात कर रहे हैं? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ. देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे है. थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट. बैकअप कीजिए ना इस बात. मैं कर रहा हूँ सर.
But if I can proceed, 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर, हाई कोर्ट इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, the petitioners have questioned the impugn order on legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो impugn है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ। कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके वो उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना फिर तो, मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। I will show that. तो फिर कैसे रोल नहीं है फिर वो, फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है That is- जिक्र है, that is what I will show today. जिक्र है कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी। बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि सजा होनी चाहिए या नहीं। It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. सेक्शन 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंपल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंपल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर ठीक है, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को ये लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ तो जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद द सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे, पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल दिया ना नहीं सर। नहीं 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 नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन हमने कराए, एक मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले लेंगे। क्वेश्चन इज कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा बराए Letter does not confer jurisdiction, sir. नो नो, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। इन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना अलग है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर वो भी देख लेते हैं। परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो क्या भी उनको, वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन पे भी आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इधर लेकिन से आगाज करें शुरू से। हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो ये कहने से तरीकों का कानून का Let us start, sir. Let us start with the constitution. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। Right, sir. शुक्र है। So let us start with sir the constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is article 218। ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose, and जो relevant उसकी दी गई 2183 में ड्यूटीज दी गई। 2183 में जी जी, और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure
that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219E में, ठीक है। So, ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So, your वो lordship is with पार्लियामेंट me. का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस। So, your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219E, 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So, think 218(3) does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है, Now, my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says is, law that the election. all it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे। अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को, वही मैं दिखाने जा रहा था सर। बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट को, फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 17 का पार्ट था। बहरहाल उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक? That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है। ये सारी बातें सिंबल ये चीजें यहाँ की एक्ट के जरिए आ रही हैं। So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं। Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सिर्फ 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है जी, पढ़ दीजिए। 209 A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections it. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? 209 209. मतलब 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? सर 207 पढ़े। मैं सारा आपको कहा ना, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट। 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, मैं भी आता हूं सिर्फ नहीं, लेकिन फिर वो आप मौकिफ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं, वो फिर आपका एक अलग मौकिफ है। नहीं, मेरा आप मौकिफ तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है, मेरा आपका मौकिफ क्या है? मेरा मौकिफ ये है सर that under the law मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन कमीशन जी ये लेकिन 207 कहता है, जी बिल्कुल कराना है, आइन तो नहीं कहता है। नहीं, मैंने अंडर द लॉ कराना है, लेकिन मेरा मौकफ ये है कि अगर मेरे इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया कानून ने, उसमें वो उसमें प्रूव करे। नहीं, इलेक्शन सर मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को इतराज है
کہ یہ इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई irregularity हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है. That is my case before this वन court. ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैं मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ सर, मैं वही पढ़ूंगा. तैयार नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि शो देखते कॉज हैं सर. कीजिए, आपको बुला सकते हैं. देखते रहा, इसलिए मैं इस मौकफ पे मैं देखने जा रहा हूँ. 209 पढ़ रहा हूँ पहले मैं. 215 नहीं, 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं. पढ़िए, please. 2091 पढ़ते हैं दोबारा. सारा जुरिस्डिक्शन का तो इशू आ रहा है ना, यही तो जी. हम आपसे क्लैरिफाई करना मगर चाहते जी, हैं. मैं clear हूँ. आप बराए करम 208 पढ़ लें. 208 भी पढ़ लें. 208 पढ़ लेते हैं. देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना. हाँ, सही. 207 से शुरू करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चलें, sir, then in that case, let us, because there'll be relevance, let us start with 200. जी, Formation of a political party. नहीं, वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना. फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. All right. ठीक है. So, मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं सर. जी, करें. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ठीक है. No quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है. I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. अगला पढ़ लें, 208 पढ़ लें. से पहले 200 मैं कमेंट कर दूं इस पे 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर political party ने convene नहीं की general meeting तो वो उसका symbol refuse कर दे. That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुए है कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज law में clear आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने law ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी. वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना, वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का. इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्होंने कराया लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए. हाँ. जो आप कहते हैं कराएं, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे. हाँ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2. A member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are not जो allowed. 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं यही तो पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. But question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3. All members of the political party at the federal, provincial and local आपका levels. कहना है सिविल कोर्ट इन तुर्बत. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात. ऐसे आपने कह दिया ना, गो टू सिविल कोर्ट. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे. Right. सिविल कोर्ट इन तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. sir, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर suppose- देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो,
और बाहर भी हो, ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। ठीक है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है भाई, हो सकता है वो आ जाए, बिल्कुल नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट का सरांखों पर, ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं। हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना, अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। 3 ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा। जी मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं। हम देख रहे हैं कौन सा धारा, मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने। प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस। जी अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल, अब इसका इसी 208 में जी। जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम, ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ECP को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड, 2 लाख रुपए की जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी पढ़ी है ना, सब सेक्शन 5 में ही है। सब सेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, not irregularity but करे ही ना, a show cause will be issued। उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? Sorry, 5 subsection 5 of 208, 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208, my submission would be they covered। का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं। अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया, अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके। अगर आप इसको पढ़ें दोबारा गौर से 5 को जी, विद इन टाइम जी, ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी, ठीक है। यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, फेल्स टू कंडक्ट सर। अब विद इन टाइम देखिए, वेयर पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम in their constitution, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर नहीं, अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है। तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं, ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा। तो आगे आ रहे हैं ना जी, चले आगे देखते हैं। 208 में नहीं आ रहा, आप 209 पढ़िए पहले। आप 209 पढ़िए।
क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना, अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो ठीक 2 है, लाख करा वाली तो बात खत्म है ना। तो वो 208 वाली बात खत्म है, बिल्कुल इलेक्शन से तो खत्म हो गई। दैट इज माय पॉइंट, 208 वाली बात खत्म है। उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं आपको लगाया। 1 साल दे दिया। मैंने इलेक्शन करा दिया, Maybe so 208 is gone, Maybe 208 is not relevant. political party in government. Sir, 208 is not relevant, that is what I am saying. ठीक है ना, ठीक है, 209 ठीक है जी। अब बात 209 पे आ जाते हैं। A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये I will इसमें बहुत pause. कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 है। फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है। पहली बात बताएं, जी। पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो बेस्ट गौहर। नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन। नाम क्या ये तो है? इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो ये तो बात की बात है ना। उसमें आया है। उस जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो नहीं देखिए, जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो ये जो तो भी पार्टी हेड बनता है हर वो चीज आती है इलेक्शन पे। जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो लेकिन रहा उन्होंने था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, but then he was असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी हाँ। पॉइंट हो या ना हो, मैं उस अगर देखिए, अगर मेरा आप- point सिर्फ अगर अभी- आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, बाबा हरा दे उसको ना। एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका भी मैं इसका जवाब मैं दे हमारे रहा हूँ। जहन में जो बात है, बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। जी। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी या आप कहें ये कानून बेमकसद वो कानून है? इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी भैया आप इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, इट हैज टू बी थ्रू ट्रायल। दिखा देना कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात। वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो साहब प्लेनरी 215 जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ सर, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चलें उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम करें ईसीपी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है। और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिल रहा। You are not ऐसा coming है to कि section two- 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are नहीं, bound by the law because सही है, section वो 215 is not. 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. करेक्ट, बट तो now इलेक्शन को कमीशन को तो go to इख्तियार the constitution of your own party कि ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं। फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये देखिए कंडीशन सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है।
ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये Why पाकिस्तान इंग्लैंड आप पे? ऐसी बात कर रहे हैं पाकिस्तान जरा किसी और के हमें साथ समझ खिलवाड़ तो आए बात को। तो मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए आप, नोट कर लें। कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को We जुरिसडिक्शन are नहीं just थी। understanding the law, whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just, ठीक है, 209 की non compliance 215 में mention है ना, if you will read 215. पढ़ लेते हैं ना, Whether the पढ़ ले। हाँ, पढ़ लेता हूँ। jurisdiction issue है नहीं, या- मैं खत्म तो कर लूँ 209 खत्म कर लेते हैं पहले। 209 हाँ, वो खत्म कर लेते हैं ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations, and addresses of office bearers elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? किस पे? हाँ, ये कौन से पेज? ये अभी जी, पेज पेज में पर है, मेरे पास नोट है। किधर है? कौन से पेज? This is at page 65 जी। If your lordship turn to page 65, 66 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held, नहीं, सर्टिफिकेट certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ वो पढ़ते हैं। Page 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 17 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए। ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है। अब 2 पे आते हैं। जी, लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमिशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये जी। तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना। अब जी। 2 पे पढ़े 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में, तो 5 साल से पहले करा दिया ना सर। 5 साल होते थे 22 को होगा ना जी। 13, 6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 13/22 को हुआ ना तो सर, 12 8 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट। अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे हो सिलेक्शन को, नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पहले अंदर, आगे बढ़ते जी। तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हाँ। हो गई। लेट अस move on. The names, designations, and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial, and local levels where applicable. ये कर दिया। The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party ये कहाँ offices. ये भी साथ लगाया, जिसको दिखाई ये ना लगा ही नहीं सकते ना अब ये दिखाई इसलिए ना। लगा सकते हैं कि सारे अनअपोज हाँ, हैं। सारे unopposed। सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना। एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वो तो जब कास्ट होंगे। देखिए यकीनन 2-4 इसीलिए लोग इसके आगे लिख दिया। देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है। वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। मतलब छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है क्या कि वहां भी अगर कोई नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आपकी अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो सकता है। जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड हो होते हैं, सकते हैं। मगर मुझे कोई ऐसा Section 70 एक सेकंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार्स एट बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देखें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज जी, ठीक है जी। वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज हों, Right. ठीक है। मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान जी, सब हो गए अनअपोज, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा।
मतलब देखिए वही टेस्ट हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। सर अब ये तो मैं जवाब मेरा एक नहीं छोटा दे सा सकता। सवाल, Before that, छोटा just- सा, छोटा हाँ जी, इसके साथ ही है। जी, कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखिए जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको Every वहां पे political पता party- चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि हाँ, अब आपने जो ये सवाल हो रहा है। पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर। एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं। पीटीआई हैज वन ह्यूज लीडर व्हिच इज इमरान खान। जी। अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रोबब्ली अपोज दैट। नाउ वी कैन नॉट आपने खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रोबेबली जी। आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रोबेबली ऐड करके। जी, तो अब नहीं अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद नहीं, मैं- खत्म कर नहीं, अगर सॉरी जी। फिर ये जमहूरियत नहीं है, जी। फिर ये आमरीत है। अगर नहीं आ रहा सर, नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो, मगर अगर आप कहें कि वो जबरन कर रहा है किसी से, जबरन हो रहा है ना, क्योंकि 14 लोग हमारे सामने कि जी हमें इलेक्शन तो लड़ने दें, हम हार जाएं बेशक। उनका जो प्रूफ है, उनका जो एविडेंस है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सेकंड के लिए अज्यूम करें, वो दिखाइए हमें, अज्यूम करते हैं एक नहीं वो सेकंड के लिए। दिखाएं पहले ना, इस बात को खत्म कर देना। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा सा पढ़ लीजिए ना, क्योंकि वो जी, पहले assume से मेरा जवाब तो देने हाँ, इनका अज्यूम कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि कोई नहीं आया, जेन्युइनली नहीं आया, दैट डज नॉट मेक द इलेक्शन वॉइड, क्योंकि आई कांट नहीं आई वुड नॉट, आप उसको वॉइड कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। करेक्ट। हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया अनअपोज, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा point वो नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखिए हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, आधी पौनी लंगड़ी लूड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए हैं चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। ये आपको उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सर उनको नहीं रोका, ले भी गए तो क्या उनको मसला हो बिल्कुल नहीं जाएगा? रोका, वो तो खैर जो भी कह दे, कोई उठ के आके कह दे जो कि भी इलेक्शन क्या नहीं कहते रहने दिया, तो मैं या क्या तो आप कह लोग सकता कहें वो कोई गैर आदमी है, दूर से सड़क पे चढ़ता आ रहा है, बिल्कुल एक गैर आदमी आदमी है। लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी को अच्छा रोका आपने नहीं, कल हामिद खान से वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया। पता क्या चल गया? क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir, मैं So तो when did you join the party? मैं तो When did you join the party? मैं तो बहुत recent When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago, When did Mr. Gore join the party? maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ रहे party. ना आप, लेकिन पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना, या तो क्या मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. कोई पार्टी पे थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। जी जी, वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था, नाम बता देना। पीपल्स पार्टी में। तो और अब अकबर नहीं। अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें। हमारा कभी नहीं था। सर आप उनको देखें, देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उनकी- समझने उनको terminate कर दिया हुआ। की कम से कम बर्दाश्त तो रखें। उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में। अब दिखाएं, मैं हम बार बार ये सवाल हाँ, पूछ ये रहे हैं, दिखा आपको दें, मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिए, ये आपके पास। दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का। दे दीजिए जी वो आपको दे रहे हैं सर, डॉक्यूमेंट टर्मिनेशन लेटर। तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं अच्छा आपसे? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए।
किस पेज पे है? टर्मिनेशन लेटर टर्मिनेशन किधर? टर्मिनेशन ही हमारे साथ है इस पेज पे? अच्छा, मैं मेंबरशिप आप पहले पेज दिखाइए ना, पेज बताएंगे। एक बात तो खत्म करें हम इसको, टर्मिनेशन नहीं है। फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है इसमें नहीं, ऐसे टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा ना, ये अलग से दे रहे हैं जी, हम कल पेपर बुक से आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग आपको आप पेपर दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं। पेपर बुक रख ले आए। नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है। करेक्ट सर, टर्मिनेशन कमिंग बैक नहीं कमिंग बैक नहीं, शो अस फिनिश दिस पॉइंट, व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की। मैंने आपको भेजा था सर वो नहीं, वो तो पुराना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि राबिता एक्ट है हमारे मेंबर कैसे बनते हैं। वो सेक्शन ये पढ़ा 201, दिस इज हाउ मेंबर्स आर टू बी फॉरवर्ड। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस एक राब्ता ऐप है व्हिच कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट आल्सो बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है। उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा। दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड If टू वोट। you are not giving me a clear answer, I will presume जी। that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा Website is not an evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी नहीं, अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे I agree, sir. नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज। आई एग्री सर, अच्छा, फिर आई कांट टेक द डॉक्यूमेंट्स, आप प्रिज्यूम कर लीजिए। नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए, मैं अब 209 पे आ रहा हूँ। नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना, जी। 205 पढ़िए। 215 है। नहीं 205 पढ़िए। जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है। कंटिन्यू रीडिंग। जी। Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, it's, you have to show, if he's not a member, show us from the record ठीक है। that you followed the. ठीक है सर, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है। If you are it will not conceding, change. if you are conceding जी। that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement will be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say, my statement may be recorded that the world is That is square. all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement. than देखिए अली जफर साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है। ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई, but the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म। ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया, तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं। कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। सो एक 14 लोग हाँ, अगर समझ आप ये आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में। सही है। अच्छा कमिंग बैक टू 209। एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं, ये कह रहे हैं, हो गए, मान ली उनकी बात। क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ।
मैं अभी भी ये कह रहा दोनों हूँ, बातें हाँ, देखें ऐसे मैं कह रहा हूँ, they're not members, my statement में भी recorded, आप कह रहे हैं कि सबूत दें, सीरियसली There must be some evidence. If आप कह रहे हैं सबूत दें, there must be some expenditure. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत है, हम कह रहे हैं कंप्लायंस शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर, वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये है कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. नहीं Akbar बता Ahmed more सकते. credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. Easily पढ़ के then this is the core issue, Core issue. whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पूरा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged, whether the wordings of this section. I agree with Or this. this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है ना? I don't agree with the ये interpretation. 216 भी पढ़ लें, I agree with the section, but I don't ये agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी लंच करने के लिए मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी है. करनी तो है मगर कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करें, मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू. 5-7 मिनट के लिए करना चाहते हैं, 2 घंटे हो गए. जब ब्रेक ऑफ कर लें लंच ब्रेक. पढ़ने application for allocation of symbol. See, I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter,
and the rules, a political party shall make an application to the commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols, skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The commission shall, Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात, जी, if the political party complies with the provisions of this act. सही है. मैं So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो देखिए जाती अली है. जफर साहब, वो बार बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी, ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप जो कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का मैं एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज आए पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. Sir, let us now. असल में ये देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस क्या जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया. तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना. हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं. बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस. ठीक है जी. ये सर. अच्छा अली जफर सर, मैं साहब, ये जो आपको documents- अली जफर साहब एक मिनट, जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है. तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप, जरा कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, या आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk. कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सर नॉमिनेशन पेपर जी योर ऑनर फाइल कर नहीं, ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें. क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर. जी, अच्छा वेबसाइट है, मुझे बताएं. ये उनसे हुआ है.
वेबसाइटों पे ये होते हैं वेबसाइट खोली ये मैं आपको सर एक CMC एक सेकंड आपकी वेबसाइट पर देख लेते हैं नॉमिनेशन फॉर्म ओके नहीं है ना फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन स्पेसिमेन अब हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दिए सर, ब्लैंक फॉर्म जो इस पे तो स्पेसिमेन पेजिंग नहीं है। कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हैं 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, नहीं, अगर 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, इसमें वो वेबसाइट पे नहीं है आपका स्पेसिमेन। एक आप ना बोलिए ना टेक द प्रिंट आउट ये, फ्रॉम द ये कह रहे हैं वेबसाइट, सर फिल इन द ब्लैंक्स। जी वो ये कह रहे हैं कि जो अली जबर साहब मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं स्पेसिफिक फॉर्म कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है। खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने वो ये है बात नहीं, ये फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे। और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें अभी खोलिए, आपके सामने दिखा दें लेकिन वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस जगह इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस देखिए आपका एप्लीकेशन जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का। Correct. सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू ये सही बात है उसी दिन नॉमिनेशन डालना है। जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी लिखा हुआ है। वाल से क्वेटा वाला ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से, जी। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं दे आर फुली अवेयर ऑफ वेयर द ऑफिसेज आर, लोकल ऑफिसेज आर। हम देखें जबानी बातों पे नहीं जाते, आप इतने वाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई बैकिंग, कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। तो वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्ट करो। वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे फिर, वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। नहीं That देखिए is आपने the लिखा हुआ है process of the election. नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव। आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा जी हूँ, ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है, जी। इशू हुआ है। जी और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिए 29/11 को ही। जी और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद। सो देयर वर 3 days और किसी को भी रोका नहीं हमने। दे वर आल्सो अवेलेबल सर। नॉमिनेशन फीस फॉर्म कितनी का थी? वसूल जो है ना वो नहीं लिखा। फीस कितनी? 50,000 50,000 जी। हाँ 50,000 अब देखिए आप 80,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी आपके शेड्यूल में। ये बैंक में जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? किसकी कैश में कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? जेब में डालो। अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हमने प्रोसेस उसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,000 12 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये। मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए सर प्रोसेस जो है ये आपको एक्सप्लेन करते ना हैं। इसको आप प्लीज, क्योंकि देखिए लॉ के मुताबिक चलना है। वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। आप बोलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर। ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, नहीं, आप देख Chief आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना एक्सप्लेन चाहते करते हैं प्रोसेस। आप प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। अपना शेड्यूल ये है, प्रोसेस क्या है? आपसे बात हो रही है ना, इट्स तो मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर तो लेट अस स्टार्ट विद देख लें साथ खड़े में हाँ। आपके, बेशक देखें, ये तो पेपर आपके हैं, हम हाँ। अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं ये तो पेपर। बिल्कुल ये है सर। 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। सर- अब आप पढ़े पहले ये देखिए, जी 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई। एक सेकंड यार रुक जाए सर। Please, one by one. वन मेरी रुक जाए One by one सर। देखते 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। फॉर्म्स Nomination forms are available. प्लीज लेट मी
explain to you, Right. you can answer that. ठीक है, Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad ठीक है, for all office bearers till 5 p.m. with spot scrutiny. ठीक। 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है, दोनों दिन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को। ठीक है। अपील कोई मैं इसको object नहीं कर रहा था, this is how it is. रिजेक्ट हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली, अपील भी डिस्पोज हो गई। नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है। पोलिंग डेट 2/12 है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीएसी 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12। ठीक है, ये है इसमें फिजिकली पॉसिबल है, आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना, आप हर सूबे में वहाँ पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए, कि सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं, पंजाब के पंजाब में, लाहौर में हाई कोर्ट्स में बनते हैं ना। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और फाइल इस्लामाबाद में होनी है, इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पिशावर में हो रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर रिस्पेक्ट टू योर तो हम ये कहें कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना, तो आपको हमने 215 में पढ़वा दिया। नहीं पढ़ा, मैं आपने पढ़ा ही नहीं सर, मैं कहाँ आया 215 में। चले पढ़िए। और सर दो चीजें आपसे मैं इसको ऑब्जर्वेशंस की रिस्पॉन्स कर दूं। तो ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आप कह रहे हैं चाहिए ना, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए, जिस तरह वो इलेक्शन देख रहे हैं, पहली बात के साथ नहीं, किसी और के भी इलेक्शंस डिफेक्टिव हैं, बिल्कुल ईसीपी को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने। पहली बात तो ये सर, वो हमने कल पूछा इनसे ईसीपीसी के, औरों के खास हुआ है तो उनका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी ये फॉर्म 65A के ऊपर। अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी। सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि टाइम लिमिट नहीं है, I have nothing to say. I'm not objecting it. नहीं, My lord is not objecting it. देखिए, my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. चले वो भी हम मान लें humanly possible है, but the question is कि वो क्वेटा वाला आदमी आएगा, इस्लामाबाद में पेपर देगा, फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा। फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक, उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस, आपने कहा पता 50,000 रुपए, तो किधर हैं 50,000 रुपए? वो बैंक में आप कहेंगे ना, बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो आप एक देखिए, या तो कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं, I always try तो where is the 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक ऑब्जर्वेशन आई जो मेरा impression हुआ, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. We are very obvious, you are very, you know, you very properly argue the cases. So we have absolutely nothing personal. हम आपसे बिल्कुल मुतासिर हैं हमेशा। So I wanted to just say, I just wanted to say कि जो observation थी, 50,000 की रसीद दे दो। जो observation है, अब दूसरों से It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ठीक है. So about my letter which your lordship is reading to me. Election schedule में तो कुछ नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूँ. About the letter that your lordship is reading to me, my submission would be कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो वो रूल्स बना दें और कहें कि कल को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल इस तरह बनाएगी, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि मैं आई एम फेलिंग टू कंप्लाई विद सम रूल्स। अभी चूंकि सारा कुछ छोड़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी आपके मुताबिक ये शेड्यूल वाज नॉट राइट, मे बी दिस इज अनरीजनेबल,
maybe your lordship can make Missing some the point. observations. We देखिए लेकिन I am हम आपको आपका शेड्यूल सर आंखों पे जी हमें उसकी कंप्लायंस दिखा दें। ठीक है, बस। वो अब मैं आता हूँ सर। हाँ बस उससे आ जाएंगे ना। लेकिन मैं अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो स्लोगन ही ये है, जुर्रत देना लोगों को, जी है बिल्कुल। निचली लेवल तक आपने इनको एम्पावर करना है सबको। So- यहाँ इतनी सीक्रेसी है आपकी इलेक्शन में, इतनी बर्डनेस है, आप लगता है कोई नहीं, कोई सीक्रेसी छुपा नहीं। के- मैं बिफोर दैट मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा I'm था। just to a later mode, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this अब वो election. ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए अगर आप किसी देखें हम दूसरी बात कर लें ना, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल। जी अगर आप पे हमला किया होता आपके मुखालिफिन ने, ठीक है, वो एक अलग बात हुई। वो देखिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं तुम किधर इलेक्शन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके अपने लोगों ने कहा कि मैं इलेक्शन तो लड़ने दें, बस इतनी सी बात है। आप हमें दिखा दें कैसा भी किया, आगे पीछे हो सर, गया। लेट अस लुक एट द जो मैंने पेपर बुक भेजी है सर। हाँ, कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं? स्टार्ट करते हैं सर 20। अब वो वी आर स्टार्टिंग विद दैट टाइम जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें। जी, अब 20 दिन भी नजर टाइम गुजर रहा है सर। हाँ? 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं वो तो कब से लगे हुए हैं। नहीं 20 दिन का टाइम अगर आप इधर से ना शुरू करें, वो तो 2021 से आपके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन करा। ठीक है, चलें, वो आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात ना माने। नहीं मेरी बात बिल्कुल ना माने। Right. कागज का टुकड़ा है। ठीक। तुम साहब कौन सा पेज है वो? नहीं बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन का पहला खत था कि इलेक्शन कराएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है सर, उसको आई कंसीड। Concede नहीं, you please deny it. नहीं, आई कंसीड। मैं कहता हूँ 20 दिन का टाइम था हमारे पास। देखिए शायद आपने पढ़ा ना हो, दिखा देते हैं। तो ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के। There was a document you referred to yesterday, My lord, that is a letter show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? page 391 in part 2. 391 part 2. देखिए असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से। ठीक है सर। सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की, उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें। अब 20 दिन में हमने नहीं, इलेक्शन उन्होंने आपको कराना है। देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है। ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस, a political party shall be issued show cause notice by the election commission, an election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है। इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम एक साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दे। उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया। उन्होंने सब ये कराया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज। ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई? चलें, ठीक है सर। दो नहीं देखिए ना, इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। नहीं कंटेस्ट करें। आपने I don't want contest to. नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट। वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको वो अभी अलग है। हाँ, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा। आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया। देखिए एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज। सो we are not bothered with this provision, that provision. Right. We are interested simply in democracy. ठीक है। You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है, बिल्कुल। If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया। अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस। ठीक है, अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी होने का, जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली, सबको उन्होंने नोटिस दे दिया। तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। मेरा अभी पहला पॉइंट है 215। जफर अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी। the whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. Tribunal नहीं sir. This, and the Peshawar High Court says that
Election tribunal has no jurisdiction. इलेक्शन कमीशन से Election commission जी. has no jurisdiction. जी. ठीक है ना? तो हमारा जो case है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court वो has मैं- said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था They सर. have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं, sir. If you violate section 209. हाँ जी. ठीक है? If I violate 209, Yes. that is important. If you- की है वो. ठीक है, तो if हाँ. you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है, that is not That does ever not. challenged. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 2. Let us read it ना सर. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये subsection 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर. फिर से पढ़ लेता हूँ. चलें. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Masjid Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको. मेरा पॉइंट वो नहीं है. Consequences के powers भी हैं उनके पास. मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी. अच्छा, आप मेरा Peshawar point का 2-1. judgment है because you are making submissions, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि you will mix your argument and Okay. respond it ठीक है quite properly. Right. So page 20 पे आप देखिए पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज, जी. वो ये कहते हैं the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है. मैंने And बहस if की. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Correct. Pakistan. That is my But first. under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल. अब सर, अब ये हो गया आपकी बात. जी, नहीं. जी, जी, अब आप जवाब Thank you very much. Now sir, मेरा 215 is the crucial section. 215(1) जो कहता है, basically it says कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर you are eligible. Now 209 section 2151 does not say कि आपको this because of this provision election commission of Pakistan जो है can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स दे दिए under 209 and the other sections, तो फिर आपको वो एलिजिबल हो जाते हैं. So there is no reference to section 208. There is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें, तो वो 2151 में कह देते, या 215 में किसी और जगह कह देते. अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. Yes. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209, This is my problem. Which means- that you cannot read 215 in isolation. which means You have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, कि it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ certificate की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is the 209 certificate? The elections have been held. to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the Constitution. political party. Right. So this is the Certificate. guiding principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to section be kept in 204 mind. so called notices to that limited extent कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया. और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया. कहते हैं fail to comply with section 209. so 209